हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला में। और आज से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम सीखने वाले हैं स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश को डेवलप करना। साथ में हम जानेंगे कि एक अच्छी रीडिंग क्या होती है, यानी कि इफ़ यू वांट टू डेवलप योर रीडिंग एबिलिटी देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना होगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। आपके सामने इसका टाइटल लगा हुआ है जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी कि दो पक्षियों की कहानी। अब देखिए दोस्तों, रीडिंग ऐसे बहुत लोगों को आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनसे रीडिंग सही से नहीं हो पाती। कारण उसका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमें कहाँ पर किस वर्ड के बाद रुकना होता है, कहाँ पॉजेज की आवश्यकता होती है, वो हम नहीं कर पाते। कहाँ पर ज़्यादा रुकना है, कहाँ पर थोड़ा कम रुकना है, ये नहीं समझ में आता। इसी कारण से रीडिंग ख़राब होती है। तो यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि हम रीड कैसे करते हैं। चलिए अब स्टोरी को थोड़ा साइनॉप्सिस मैंने शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि अभी जो हमारा देखिए 3 पेजेस में स्टोरी है, तो हर पेज में आपको ये मिलेगा थोड़ा सा, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी स्टोरी के बारे में। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कैसे पढ़ा अ मदर बर्ड। अब यहाँ तक एक ही वर्ड है ये, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, एंड से जोड़ा गया है इसको, इसलिए एंड कंजंक्शन का काम कर रहा है। और जब कभी कंजंक्शन आता है तो हमें क्या याद रखनी चाहिए कि वहाँ पर थोड़ा सा हल्का पॉज होना चाहिए। तो जैसे देखिए, अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। द मदर वॉज किल्ड in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. तो आपने देखा मैंने कैसे पढ़ा, आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है अगर आपने को मतलब आपको डेवलप करना है अपने रीडिंग को। तो अब आगे आगे आप देखते जाइए, मैं इस कहानी को पढ़ते जाऊंगा, समझाते भी जाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है हर लाइन को। आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और आपको वीडियो अगर पसंद आई, आप चाहते हैं कि मैं इसका हिंदी भी आपको अपलोड करूँ वर्ड बाय वर्ड समझा करके, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर करूँगा। अब स्टार्ट करते हैं आगे। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall cherry tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. One day there was a big storm. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big, heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately, the baby birds, the fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. नाउ आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे पढ़ा। आपको भी इस तरह से ही सुन करके पढ़ना है। अब हम आगे की स्टोरी को देखते हैं, ठीक है। आपको भी ध्यान से उन जो सेंटेंसेस को मैं जैसे पढ़ रहा हूँ, आपको भी वैसे पढ़ना है ताकि आप इसे अच्छे से क्लियर कर पाएँ। Days passed and the baby birds became big birds. One day, the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and wait for a while. Come and take his jewels and his horse. Hurry up, or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. Now I think you have understood how to read this passage or this para. We have some other things, like here is the synopsis or the summary of the other part of this story. So let's read it. The
The king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. Now move to the story and read it again. So soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly, he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other one, or the other bird outside the cave," he said to himself loudly. "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then, the Rishi entered the ashram, and we are going to read the third passage of this story. Here you can see the bird, the Rishi, the horse, and the king. Now read it. "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food." The king told the Rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. "The forest is full of surprises," he said. The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I'll tell you more about this place and these birds." So, friends, that's it, the end of this story. I hope you all have understood how to read a story. Don't be so fast and don't try to read so fastly, so hurriedly. Try to enjoy each and every word and try to understand the meaning by reading it or by at the time of reading it. Okay, so we will meet in the next video. Till then, take care. Jai Hind.